मैं यूजुअली एंड वाली कन्वर्सेशंस लेता हूँ क्योंकि सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो शुएब साहब ने पहली विकेट हमें दे दी है। तो बहरहाल रीस्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह से ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उसकी मेन जो वजूहत है वो ये है कि जिस तरीके से आपने नोटिस किया कि चैट जीपीटी और इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पीपल आर जस्ट बीइंग फ्रेंजी कि हमारी जॉब कहाँ जाएगी। सो अब वो सारी रीस्किलिंग की ज़रूरत है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारे स्किल्स की ज़रूरत है, एंड प्लस हार्ड स्किल्स भी और सॉफ्ट स्किल्स भी, ये आगे का एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक दिस कन्वर्सेशन इज समथिंग वेरी इंटाइसिंग, इसलिए मैंने ज्वाइन भी किया ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले। ऑब्वियसली हम एक इदारा भी चलाते हैं तो ऑब्वियसली एक सीखने का मौका मिलता है और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पर एआई, जैसे हम ये कहते हैं कि इस वक्त एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डेटा साइंस और एआई जो है ना वो बाकायदा एक फील्ड कही जाती है। फॉर रिसर्चर्स दिस इज अ फील्ड, बट फॉर अदर्स दिस इज कि आपका जो भी डोमेन है, आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आप एआई को साथ में सीखो और कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सीखने की जरूरत है। नॉट एवरीवन शुड बी अ एआई रिसर्चर देमसेल्व्स बिकॉज वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक काम है, दैट इज नॉट अ कैरियर इन प्रोफेशन इटसेल्फ। तो हर एक कह रहा है कि मुझे एआई में जाना है, मुझे एआई करना है। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू बी। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आप बोलो मैं एआई लिटरेट हो गया हूँ और मुझे ये सारी टेक्निक्स आती हैं, डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स आती हैं और इनको यूज करते हुए मैं फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट हूँ या फाइनेंशियल डेटा साइंटिस्ट हूँ। दिस इज द टर्म इन कॉइन वी आर बीन डूइंग फॉर लास्ट 5 years एट Karachi.ai, जो कि नॉन सीएस और सीएस बैकग्राउंड्स की एक यूनिफाइड कम्युनिटी है जो कि सबको एक्सेसिबल एजुकेशन दे रही है फॉर एआई। आई थिंक दैट्स द पार्ट वी आर प्लेइंग इनटू। So can you talk a little bit about the model of Karachi.ai? Do people pay for your training? Okay. How many people have you trained so far? Okay. So हमने कोशिश ये की है कि कतरा करें लेकिन बेहतर करें। तो अब तक हमारी जो एलुमनाई है उसका जो काउंट है वो सिर्फ 500 है, बट दीज 500 पीपल्स आर दोस्त। अगर आज मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ तो आई वुड लव टू हायर एवरी 500 ऑफ देम। That's the confidence what we give in Karachi.ai in terms of quality. Then the model is obviously we have the paid courses, but the unique thing is we just don't push technologies into the play, like learn Python programming, learn data science. We say 3 qualifications. Me being myself in ACCA, I'm not a CS graduate, so मैंने वो मॉडल ACCA से बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल का क्वालिफिकेशन का एक मॉडल होता है। That is, you prepare a person for a role. So we have 3 kind of certifications in place. That is certified data analyst, certified visualization expert, also known as a BI expert, and the third one is that budding new field for CS guys converting from SE background is certified data engineer. So this is where we find our success because our people are like battle hardened, ready for the role to get उनकी JD और उनका जो designation होता है वो वही होता है जो वही certification offer करती है. So this is the entire model around. Great, thank you. Right away, but let's make a statement. Okay, so we work in education and we also are linked with the export sort of international economy of video generation, image generation, animation, and computer graphic imaging. We started and did a bit of a spin-off about 2.5 years ago. So I'll talk more about from that perspective because I think reskilling is more relevant there. So since the advent of ChatGPT, I personally and other colleagues in the industry have been feeling that in the next 3 to 5 years, either somebody would be completely AI enabled or they would not be even considered a professional in their field. So for the last 6-7 months, we've been trying to understand how we can prepare ourselves to be AI ready when the time comes. And honestly, the most sad, thing about this entire effort is that about 60 or 70 people are now engaged in our company who work at different parts of the animation value chain. And we've done some experiments helping people, adopt some of the prompting techniques. But we realized that the workforce that we deal with and the workforce we deal with is a good sample of the workforce that comes with not a bachelor's degree from a university, because folks that are engaged in animation studios and video and even the entire TV industry, they typically come from informal channels through vocational training institutes, doing a little bit of a diploma, just learning something on their own. So they're not those who have a master's in something or a bachelor's in, they just something they've just done a lot of work and they've learned. So obviously they haven't gone through that rigor of
that college education that you expect someone to have. And then obviously with that, you understand that, okay, somebody went through a very good 4-year program, would be able to pick up a new skill, and then they would be self-learners. So I feel that this entire segment, which is a huge segment, I mean, video and so many other vocational fields generate a lot of jobs in our economy. They're having trouble just to understand what this generative AI is, let alone come up with really strong prompts and really understand how to use this tool to help them do the job faster or in a simpler way. So I think going forward, one of the biggest challenges, and this would be applicable for tens of millions of people in Pakistan, I think in the next 2 to 3 years, we will not be able to convert them into AI-enabled professionals. So we haven't figured out a solution just yet, because the learning gap and the ability gap is so big that for an organization to invest in their colleagues to make them AI ready, that is not going to be sort of a, when you do cost benefit analysis, you'd find yourself better off hiring somebody who is AI ready and then maybe letting this person go who's not able to compete with the new individual, because the intellectual level that this workforce level has folks who come with vocational background, for them to understand these cutting edge technologies and to be able to work with these new tools and to figure out the really nuances of all the powerful hidden features that every tech offers these days, it's just not possible for them. So I think that's sort of the problem that I bring today. How can we as a society, with government support, with public-private partnerships, how can we invest in those tens of millions of people who, organizations will not have any jobs for them? I can foresee in the next 2 to 3 years, 30 to 40 people out of the 60, 65 folks sample size that I have, I don't think we will have a job for them. And this is started happening. I also sit in the committee, a Pasha committee for animation, gaming and graphics. And very recently, one of the biggest gaming studios from Karachi and Lahore, they let go 70 folks from the content writing business division, because ChatGPT, nobody could compete with ChatGPT, and they just had their top 5 guys who were generating as much work as the other 20 were doing. So they let them go. The next step, they were saying, would happen with their artists, because for game art, concept artists and folks who do average work, they cannot do it with the Gen 1 engine. And most of the folks that we work with in Pakistan are average workers, so average workers will be wiped out. How do you make an average worker connect with AI? I think, how do we solve that? That's one of the biggest problems that I think we have. So OpenAI basically says that 10% of the skills of 19% of the workforce will be replaced by, and 50% of the skills of 19% of the workforce will be replaced by AI, and 10% skills of the remaining 80% of the workforce will be replaced by AI. I think that's an estimate for the developer. Yes. In Pakistan, I think it's going to be reverse. So 50% skills of 80% of the people are going to be replaced by AI, and 10% of 19%, right? So that's a huge number. That's going to create 50% unemployment in essentially the knowledge workers. These are knowledge workers in Pakistan. Yes. In Pakistani context, these are knowledge workers. They are low level. All of us are low level knowledge workers, but they are knowledge workers in Pakistan. So ये जो knowledge worker की unemployment है ना, this is going to hit really hard at some point. लेकिन $15 an hour पे हम typically काम उठाते हैं, and it's very competitive, especially for high end modeling. $15. So there's kind of value chain. Coding is obviously higher. $15 में हमारे 3 लोग काम करते हैं, तो वो काम deliver होता है, and हमारे बिल भी बारे में आते हैं, and we're still happy. And it's not, when I say we, it's not just me, it's many other game development companies and animation studios and even some of the software houses and a lot of these, IT-enabled services export companies. So even for somebody who's willing to pay $15 to one individual, यहाँ पे 3 लोग मिलके वो काम deliver कर रहे हैं. तो obviously low value output होती है, efficiency भी low होती है. तो ये सब चीजें AI replace कर देगा. इनको train कर सकते हैं हम. इन पे again अभी एक बात हो रही थी कि भाई इन पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है. तो ये भी एक सवाल है, क्या इन लोगों पे इन्वेस्ट करें
या इनको सर्विसेज सेक्टर में ले आए, maybe they'll be running our restaurants and doing all those physical things. और जो AI enabled partners हैं वो फिर इन लोगों के साथ मिलके काम करें, इनको 500 की बजाय इनसे कहें कि 5,000 लोग generate करें. So I mean that's sort of I think the option that we have. So Sarah in particular from the medical. So I run a telemedicine company called Sehat Kahani, and we connect online doctors to patients. And I think medical, jitna maine dekha hai apne kaam mein, is a field where there is absolute need to bring AI into the picture, particularly for our country, because we have, if we talk about the overall dynamics, and this is a very crude number because we don't have a lot of discrete data available, but we have half a doctor for 1,000 patients in Pakistan. And the unfortunate thing is that 85% of these doctors work in urban areas. So we have a very, very small scale medical workforce working in the rural areas. How it translates is, for example, if you and me go to a good quality hospital, in Karachi, we'll find good quality doctors, we'll find consultants, we'll find specialists. If you start walking out of Karachi into cities like Hyderabad or Sakkar, or even beyond that, in tier B, tier C cities, you will find average quality medical workforce working there. But if you go beyond that, which is generally the 60% of our country, which is more rural, you will not find doctors there. Who do you find there? You find nurses, you find quacks, you find midwives, you find dispensers, playing the role of doctors, sometimes by choice, sometimes by default, because everyone needs healthcare all throughout their life, and if they don't find a doctor, they will go somewhere. What we see in our work when we go into these communities and we start looking for people to connect with our network and to use Sehat Kahani platform, they have already been giving services in the last 10 or 12 years in their communities, playing the role of that doctor. And when we ask them that you do not need to become a doctor, we'll give you a system by which it will connect you to a doctor. That's something very difficult for them to understand. It's very difficult for them to adapt to. But once they start doing it, they start recognizing the value of it. And then they start increasing their patient flow. And this I've seen happen 59 times. That once they understand the system, once they understand that this is an X factor that their clinic has and no other community member has in the community, they start applying it more. So how I see AI playing a very important role is that everywhere there is medical workforce not available, AI can help a low quality medical workforce worker convert into an extremely high quality medical workforce worker. The unfortunate part is that medicine in Pakistan is extremely manual. A doctor-patient connection is very manual. It is not data-driven. So we do trust a doctor, which is in a human form, but none of us trust data. None of us will talk to a virtual assistant today for something like fever or pain also. Because you want that doctor साहब हमें देखें, doctor साहब हमसे 10 सवाल पूछें, और doctor साहब हमें दवाई बताएं. For many in this country, that is a quack or a dispenser or midwife. They will ask them 10 questions, they will overfeed them medicine or antibiotics. So I see the first thing in reskilling medical workforce is at least giving them a basic clinical decision support system that can help them identify basic primary healthcare issues. Something that we did in our network is because we also bring a lot of female doctors back to work after a gap. And medical knowledge is not something you can have for a longer period of time. It keeps on changing. So a lot of doctors that we have also struggle with identifying something as simple as pneumonia or diarrhea. So one thing that we started giving them was we gave them a basic decision support system for fever, for bleeding, for pain. And what it does is by a set of questions, it recognizes, is this pneumonia? Is this typhoid? Is this something which can be reduced into at least 3 things, and then you can start treatment? Unfortunately, we have not reached that stage to give that same technology to the nurse that is sitting on the other end, because that is what I want to do. I want to give that community healthcare worker that technology so that patients, when come to them in high flows, she does the initial diagnosis, she takes out that 3 things that can happen, and then she connects to a doctor. What it will do is she'll be able to see more patients, will be more standardized, she'll have tons of data available, and she will need lesser doctors to segregate to and send the patient to. I think this is just one of the application of AI that I'm talking about. There's humongous application of AI and data in healthcare. You know, we do talk about predictive analysis. Right now, we get a lot of data on our platform daily.
And we are using that to kind of predict for next month which are the diseases that can happen in a country like Pakistan, and what can we do to make a patient more aware. So, for example, when we know the flu cases start rising up on our platform, we start sending preventive healthcare messaging that, wear a mask, or, sanitize more, or do this, do that. But beyond that, for example, for a person who's suffering from cardiac issues, if you have their blood pressure easing over the years and they're showing to a cardiologist on a platform and their data is being tracked, you can send them reminders on when their appointment can be, what medicines they need to have, what lifestyle modifications they need to make. So precision, make it personalized, make it predictive. So much can be done, but I think what we've done is first start with clinical decision support system, where we standardize the quality of care that we're providing on our platform. Yes. It's an area started giving specialists. Yes. Then to stop. It can. I just feel that if you talk about practicality, then again, there's a lot of assistive devices that can be plugged in primary healthcare, which is where all my effort and practice has been. So, for example, in our clinics, for a basic ECG, हमारा अगर सखर में क्लिनिक है, या सखर तो इज अ बेटर एग्जांपल, हमारा क्लिनिक है टंडोवाला यार्ड में. अगर हम ECG करवाना चाहते हैं पेशेंट की, तो उसको हैदराबाद आना पड़ता है. For that simple test, 5-minute test, जो कि easily plug in हो सकता है. I think in those areas to start with, basic ECG, basic X-ray, basic ultrasound, and in our model now we've developed that technology in which we've plugged in an ultrasound probe in our clinics, and the images can be read by a doctor. But initially, जब हमने clinic बनाने शुरू किए थे, तो it used to take us an extraordinary effort to get a sonologist to come to our clinic and do an ultrasound weekly, because they aren't available. I'll give you a small example. We did a project with the government during COVID for critical care. So we gave our app on emergency care bedside, so that because there were 70 critical care specialists in our country, 70. So when we did this in Balochistan, someone told me that Balochistan has one critical care specialist in the entire province. So imagine if you have an AI-based critical care system available on the bedside for medical doctors and emergencies to use, because these are all junior doctors. अगर आप आवाखाने में चले जाएं, तो आपको बिल्कुल basic medical doctor नजर आएगा emergency में, जो कि सबसे पहला step होता है triaging. So I believe that in that model in critical care, absolute can make a remarkable difference to healthcare. Well, the youth population and I started. Yeah, and more reflux for good quality doctors. In the workforce also, you have a bad, good. All doctors are not good doctors. They're average doctors, they're bad doctors, they're good doctors. The best quality doctors, the best quality nurses, the best quality physiotherapists are all going outside Pakistan. And I'm telling you, if you go to if you go to the UK embassy, which is more achievable to see, because you can't go into the US embassy. If you go there and if you see in a current day, I can tell you, of the young people that you see sitting in the waiting area, 70% are doctors. They're all running away. So I think for that point also, you need more and more technology to overcome the shortage that we're facing. I'm going to come back to you about how to skill people, but let's start the how to skill parts with. And thank you very much. And Atar and Nida always do some deep discussion or more advanced kind of topics to discuss. So I really appreciate that. I am the X at Amantech. This is not an X as an EX. This is an X as an AXE. So you see, like an X. So I've been an X to many places, but there I was an AXE. And the reason why he called me an X is because I went there, my mandate to cut a lot of people, and I did cut a lot of people. वहाँ पे 247 बंदे थे. By the time I finished, it was 108 left. And जब मैं गया था तो उस वक्त हम 800 बंदा ग्रेजुएट कर रहे थे 247 बंदों के साथ, और जब 108 बंदे थे तो 2700 बंदा ग्रेजुएट कर रहे थे. So what it shows to you in Pakistan, every organization has got over-employment. There's too much inefficiency, and purpose of organizations, government, private sector में ये क्या है कि employment generation, which is a bit of disservice to people also, because वो unfortunately grow भी नहीं करते, develop भी नहीं करते. They don't achieve their purpose, and they stick around and they don't develop, and unfortunately, and then
they are no longer fit for the market. So एक मेरा जो just to give you the background of it. So मेरा जो experience है वो है अमन टेक में, जहाँ पे हमने 14,000 बच्चों को graduate किया था at a very basic level. For the first time in vocational training industry, vocational training में 50% employment rate होता था, which is like randomly आप बच्चे को train कर रहे हैं तो employment हो रही है. So it was literally no return on investment. And for the first time in any vocational training institute, we had increased it to 78% of employment, जो कि अभी बढ़ के 82% चली गई है. एक तो ये mass level पे हुआ था. दूसरी thing that I'm very proud of is कि उस experience के through 5 CEOs, 5 people I'd hired over a period of time. I'd hired 200, but 5 people I'd hired subsequently went on to become CEOs of that organization and multiple organizations. So in terms of human capital development, I've done work both at a very micro level, individual level, but also at a scale level. And currently what I do is I run the Cordoba Ventures, which is a human potential venture builder, venture capital firm. And one of the things we do is, like Dr. Sara has mentioned, we've got a nursing and allied health training institute called Cordoba Care Institute of Health Management, which is to train the next generation of community health workers, allied health workers, and to upskill them. So these are the reason why I'm very, this thing is very exciting to me, because it touch on some themes and topics that I get very excited about. Number one is unskilling. I think your topic is misframed and wrong. It should be unskilling rather than reskilling. Because in order to reskill, you have to first unskill. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं जब CA करने गया था, I went to Pakistani education and I went abroad. तो मेरे साथ एक बंदा होता था, हैरी डनलॉप. हैरी डनलॉप used to sit with me as a good friend. वो बेसिकली क्लास में बहुत अटेंशन देता था और मैं क्लास में अटेंशन नहीं देता था. और फिर मैं घर में जाके होमवर्क करता था. आई एम टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंग्लैंड के डेज में. And then he used to top the exams and I used to struggle. So हमारा जो मॉडल है पूरा का पूरा, वो है मॉडल is not based on understanding or absorbing lessons, learning there and then. It is all about going back home and doing a ratta and going back home and learning through repetition. So that model of education in AI world is not going to produce the kind of thinking that you talked about, the kind of skills that you're going to have. So you have to basically unlearn that, and your whole primary, secondary education system has to be refashioned. So unfortunately, the scale of the problem is much bigger than we imagine. It's just not an employee problem. It goes to the primary and the secondary. And I realized it. And कि यार ये लोग तो जो बाहर के लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो तो पढ़ते नहीं है, वो मतलब होमवर्क ही नहीं करते. They just learn there and then, and they understand it, they break it down, and it's at the conceptual level they get things, and like us, we try to learn it. So पहली बात है unskilling करनी है. दूसरी बात है जो another area which I'm very interested and excited about is the merger of engineering and humanities or liberal arts, जो कि आफाक का area है, जो आफाक करते हैं, which is building things and thinking about problems. ये हमारे मुल्क में, because we are all in silos, आप या तो इंजीनियर बनेंगे या आप सोशल साइंटिस्ट बनेंगे. आई थिंक AI के ज़माने में इन दोनों का मर्जर होना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा. And how to build both thinking skills, creativity skills, critical thinking skills, as well as very structured, how do you go about solving a problem, the two of them combined together is going to be very important. So very few education institutions do that. Third thing जो हमारे एरिया में बहुत मसला आएगा वो है टैलेंट एक्विजिशन, which is हमारे मुल्क में किस तरह टैलेंट एक्विजिशन होती है. हमारे मुल्क में टैलेंट एक्विजिशन होती है टिक बॉक्स. हैव यू डन इट बिफोर? See, talent acquisition in our country is based on not your potential, but what you have done and what you've been there, and what you've done before. It is not at all done on looking at the learning agility of a person and looking at what the person is capable of and what he can achieve in the future. It is highly regressive. It is highly backward looking. And that's how we hire people. And that's why people go into boxes and people are not able to have exponential careers, because we put people into boxes and we can't take people boxes out. So whole way of how we hire people, how we acquire talent has to change, because it has to be based on the potential, the learning ability of the person, then actually in the sense of what they have done. The fourth element that I'm also excited is the human consciousness. So the human consciousness, what people call the soul, is the real deal, is what we are about, is what the human learning is about, to realize your full potential. Unfortunately, life happens, things happen. Pakistan mein learning happens, होते हो कहते आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते.
बचपन में आई वाज द यंगेस्ट, तो बचपन में चपेड़े भी काफी पड़ती थी चीज कि यार आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फॉर लॉट ऑफ डिसिप्लिन. सो व्हाट दैट डज इज दैट ह्यूमन पोटेंशियल जो होती है वो क्लोज आउट होनी हो जाती है, वो बनवानी शुरू हो जाती है. Whereas if you look at some mystic and Zen concepts, they say that teacher is not someone who teaches, but he's someone who reveals what is already inside of you, your own potential. एंड आई थिंक ये जो चीज है ये एक हमारी लर्निंग में और ट्रेनिंग में ये हमारी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारा बहुत ज्यादा ओल्ड रोड लर्निंग सिस्टम है. वो उसको उजागर करना कि व्हाट इज द इननेट पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन which is inherently the Finnish model of education, but Islamic बहुत पुराना इस्लामिक मॉडल भी यही था कि ये हर बंदे का कस्टमाइज एजुकेशन होनी चाहिए, लर्निंग पैटर्न होनी चाहिए. that should be the case, जो कि हमें एक और चैलेंज है. Another area is 5 C's of liberal arts education, which is critical thinking, communication, collaboration, character, and creativity. ये 5 C's very important है in order for you to become a problem solver. There's a lot of education in Singapore and others are being organized around that. And I think that is not how our education system works. Lastly, I disagree with the point that Pakistan में चीजें बहुत जल्दी collapse की तरफ जाएंगी. I think we underestimate our ability to be stubborn, our ability to not change in the face of facts, data, and the reality that is emerging. उसमें हमारे स्टेटों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, और दूसरा हाथ है हमारे गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, लाइसेंस राज का. सो द वर्ल्ड में चेंज, बट हम एक का एक आइलैंड बना लेंगे अपने इर्द कि वहां पे अंदर जो है हम वही पुरानी रवाबित में, पुराने मैकेनिज्म में हम भी ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट डजंट मीन that one day we will not face the eventuality that we realize that Bangladesh has gone far ahead of us and we are far behind. But हमारे यहाँ जो status quo है उससे इतनी ज्यादा लोगों को मोहब्बत है कि उसके पीछे हम अपना inevitable change को बहुत डिले करेंगे. And whether it's healthcare or other fields, इसमें हमारी चीजें change जो है वो आने में टाइम लगेगा. I hope that's not the case. I hope we change ahead of the time. But our history, our DNA and our mindset is not such that is very conducive to change. We do resist change. Thank you. Yes, so one question is, what were you doing in the class? हैरी तो पढ़ रहा था, तुम क्या कर रहे थे? ये नहीं. So वो मेरे फर्स्ट ग्रेड में टीचर ने मेरे फादर को बताया था कि यार ये क्लास में बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा. बाहर कौन था? Look, being fifth, 1, 2, 3, 4, 5. चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी. मैं आपको पहला चांस देने वाला था, आपने उसको माइक करा दिया. अच्छी बात है, मतलब उन्होंने सारी मुश्किल बातें कर ली. जो बात, I mean, basically we can't stop it. This आपको बोले कि जी हम उस पर रेगुलेशन लगा देंगे, ऐसा वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. You can't stop. It's there. One, I'll come back to some of the things that were mentioned and look at them in a slightly different way. But one thing that I see now more and more is कि हमको थोड़ी सी अपनी जो categories हैं, definitions को थोड़ा broaden करना पड़ेगा. I've been hiring professors in computer science or data science, and they really don't know data science. But the work they're doing is quite good. उनको basics नहीं आती, linear algebra नहीं आता, orthogonality and normalization नहीं आती. But some of the work they're doing in spite of that is really good. आप में से कुछ programmers हैं, you may not know what an operating system is, but you can still write a program. People do that, scratching करते हैं. तो I think एक तो ये होगा कि what is data science or what is AI and what is applied AI, जो आपने बात की. I think we'll have to think about that in a slightly different way, right? Perfect. So, जो बात करते हैं Microsoft Word की एग्जांपल ले लें, right? Microsoft Word की बात कर लें. At one time, if you were, आप word processing की आप कोर्स करते थे, and you could get a job being a word processing में करता हूँ मैं, ये करता हूँ, बहुत बड़ी बात थी. Now you're expected to know Microsoft Word. So I think AI is going that way. It's going to be, you need to know, just like if you know how to use a slide rule one time or a calculator or a Microsoft Word or Excel,
it's going to be a tool, and there's some very clear evidence that that's what's happening. जहाँ तक आप बात करते हैं कि the other side, I made a few notes once, which I never do, but जब आपने बात की creativity की, so we use something called Bloom's taxonomy in education, 7-6 layer model. उसकी जो नीचे वाले 2-3 pyramids के layers हैं, वो है remembering, understanding, applying, analyzing. अब तो बड़ा साफ डेटा आ गया है कि आप चैट जीपीटी में एक बुक डाल दो और तमाम सवाल हल कर लेता है. अगर चाहे आपको सी की वैल्यू चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो चीजें नीचे वाली खा गया, राइट. जो आप बात कर रहे थे कि इफ वी a lot of our graduates, a lot of our workforce were actually just fodder, and that's what they were doing. It was front work, and that's disappearing. And you and I may not like it, but we can't change that. It's there, right? I put out and I shared with both our wonderful hosts, Anatha, this morning. This is a post from yesterday, David Martin's CS50 course, and I think it's worth reading. And Harvard University embraces generative AI in the classroom, adopting it as an official learning tool for its flagship coding course, which is CS50. Starting this fall, students enrolled in CS50, Introduction to Computer Science, will be encouraged to use AI to help debug code, give feedback on their design, and answer individual questions about error messages and unfamiliar lines of code. Our own hope is that through AI, we can eventually approximate a one-to-one teacher to student ratio for every student in CS50, as by providing them with software-based tools that 24/7 can support their learning at a pace and in a style that works best for them individually. This is CS50 producer or professor David Jamal. So good schools are doing this, and we need to look at, the thing is that the amount of material out there is completely overwhelming. There's none of us who can even track what's coming down. We're under-resourced, so use people who are better resourced than us. MIT has a huge area now dedicated to this. They have people like Ed Crawley. They're working on how best to incorporate this, take it forward. I shared with you the ETH model, and that was 2 months old, and it's already gone. But it's things have moved well beyond that. So the way ahead that I say is that jo aapne baat ki, we have to do 2 things primarily, and this is a big mind shift change. We have to teach creativity and teach it creatively, or teach creatively, and there's no choice. If you're not teaching creative work, because in the Bloom's pyramid, choti jo hai uski, the top part is creativity, and that's where you do things that are fun. Those are things where you add value. The lower things are gone, right? They disappeared. So if you're not putting that as, that's the cost you need to bring first before you decide what kind of cart you're going to get. So you say, we must, and Singapore ki aap baat kar rahe the, Singapore's got an enviable higher education system. But they realized that they weren't, it's a sort of a police state. Well, I don't want to hear that. Hopefully they'll still give me a visa to go there, but it's, some people feel that it's not creative enough, because that sort of wild flourishing that occurs is not happening. So Singapore started a program university called SUTD. It's the Singapore University of Technology and Design. It's the only university ever that MIT has collaborated with as an undergraduate university. So why did SUTD come in? Because they realized the importance of technology and design. And so design for them is exploring new areas, all the things we talk about, right? So Singapore's done it, the other place that I want to talk about is, for us in Pakistan, you talked about this to introduce and emphasize open-ended learning and assessment. I'll give you a really clear example of that. One thing in particular for Pakistan that has been an issue for us is the language gap. We're a fortunate minority who are fluent in English, or somewhat fluent. Right? My English teacher may disagree, but what has not worked is very clear. The last 30 years has not worked.
It's like beating a dead horse. And for 30s, it's dead. It's not going to move today. आपने जिस तरह अंग्रेजी पढ़ाते हैं, it has not worked. Right? There are different ways of doing it. TESOL है, teaching English systems of other languages, बड़े mature mechanisms हैं. आपने again वही बात है, priority डालें. ये नहीं कि करना है, सोचना है किस तरह करना है कामयाबी के लिए. Right? It's not the matter of doing it. It's like, what is your KPI? Because if your KPI is to get it done, it's different. KPI is to make a change is very different. Right? So उस चीज में थोड़ी सी clarity, थोड़ी सी वजाहत लाओ. Right? The other thing, and I'll share this with you, is that I teach at universities in the US also. All of us have gone through the similar courses, Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3 sometimes, or multivariate calculus. Shut up, that it's in the bunch to me, right? But I thought you can see that, right? Uske baad, multivariate calculus, linear algebra, all that. Now, those are the courses if you're doing mathematics as a degree, that's what you take. So schools are saying that that's not the way to teach mathematics, because our students don't need to learn math. What they need to learn is the application of math. So they're going from maths paradigm to an applied maths paradigm. All in, which was an amazing experiment. In their first year, they started with their two courses that every first year student took. One was SC 1111, which is science, modeling and simulation of the physical world. And along with that, you took a course called Math 1111, modeling and simulation of the physical world. So, हम बात करते हैं लिनियरिटी की. आप किसी भी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को किसी इंजीनियरिंग स्कूल में बोला, यार मुझे लिनियरिटी समझाओ. सर वो इक्वेशन होती है, ये होता है. यार you go by कीनो, ₹3 का एक कीनो, 2 कीनो ₹6 के, 3 कीनो ₹9 के. Draw a line. That's linear system, right? उसमें आपने बोला कि हर 100 कीनो का आपको एक plate लेना है, you're going to jump on it, right? Or you get a distance, you got non-linearity. So the thing is, when you do model-based mathematics, it's so much easier. I mean, 3 chapters of theory will not teach you linearity. It would, with those 30 seconds to all understand. We could all understand Kinu and line KG, CD line KG, right? So we need to rethink a lot of this thing, but we don't have to do it alone. That's not going to work well. There's a lot of resources out there. So the key takeaways I had, because I actually need to leave, is that like every transition, the age of AI is a time of excitement and fear, but also of opportunity. It's overwhelming, absolutely, but losing hope will not help us. Not doing anything is not a choice we can afford to do. We have to keep an eye out for good ideas. And those ideas, when we pick them up, whether it's from Iran, or whether it's from California, or whether it's from Australia, we need to contextualize what works for our is out there. And that's why, while overwhelmed, while more than a little bit uneasy by just the cataclysmic changes that are occurring, I think that discussions like these, fora like these, are so essential, because even when we've been thinking about it, they force us to articulate, right? They force us to debate. Without debate and discourse, we may have ideas, and this process of engagement is so important for us to take it forward, right? So we should be doing more of these. And because, the 6 of us can't sort everything out. If there's 600 of us, we may still not be able to do it up, but people will come up with more interesting ideas, more interesting facets they will look at that you and I may not have seen. So for that, I am weary, I am concerned, but I'm not despondent. And with that, I bid you goodbye, because I have to go to another event. Thank you. Yeah. I think let's start with, so the scaling का challenge है. इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक्टिव एआई पॉलिसी है, उन्हें कह रही है कि हमने अगले 3 साल में 1 मिलियन लोगों को ट्रेन कर. I don't know what they were thinking, but they've said this, put this in writing. So how do we train 1 million people in years? I mean, you have made a point कि retraining करने की तो possibility नहीं है, आपको fresh लोगों को ही train करना पड़ेगा. But if you were to scale your initiative, say by 1,000 times of what you're doing right now, what do you need to do? एक चीज शोएब साहब से बात की थी कि 1-to-1 रेशियो with regards to using AI. So अगर हम AI सिखाना चाहते हैं,
तो भी एआई की मदद ले सकते हैं। आज जो हम एक चैलेंज देख रहे हैं, हमारा जो एक टिपिकल बैच होता है वो 30 बच्चों का होता है मैक्सिमम, एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टीचर टू स्टूडेंट। मेरा रेशियो है 1:30। स्टिल अगर मुझे 1:1 या 1:5 रेशियो पे जाना है, एआई कैन एक्चुअली हेल्प दैट। तो 1 मिलियन तो एक मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी टारगेट एम्बिशियस नहीं होता। 1 मिलियन टारगेट करेंगे तो कुछ नीचे आएंगे, लेकिन लोग किस तरह की स्किलिंग सिखानी? क्या सब लोगों को एआई की, क्या एआई का मतलब पाइथन आना है? मतलब क्या सब लोगों को पाइथन आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। लोगों को लिटरेट होना चाहिए। और मैं साथ में बात कर रहा था कि क्रिएटिव अपनी फील्ड के हिसाब से होना चाहिए। एग्जैक्टली यू विल हैव टू, फॉर एग्जांपल एनिमेटर्स को एआई सिखाने का कोई कौन सा मतलब है? डॉक्टर्स को Yes. Exactly, yes. They'll have to run multiple Exactly. cohorts of multiple people, right? सो इनिशिएटिव इस तरह से ले रहे हैं कि हमने जिस तरह से हम बात करते हैं टैक्सेस की या डिफरेंट सब्सिडीज की बात करते हैं, तो वहाँ हम इंडस्ट्री के नाम ले लेके काउंट करते हैं, इसको देना है, इसको ये नहीं करना है, इसको ये करना है। सो वी हैव अ लार्ज प्लेथोरा ऑफ इंडस्ट्रीज। हमें ऐसे ही एआई के एजुकेशन को भी इम्पार्ट करना पड़ेगा। व्हाट्स एआई फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, व्हाट एआई फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और इस तरह की हमारी जैसी छोटी सी एकेडमीज हजारों बनानी पड़ेगी जो कि लोगों को फैसिलिटेट करेंगी माइक्रो लेवल पे। मतलब ये कि हम अगर बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेंगे तो इवेंचुअली जो हमने देखा है, वैनिटी मैट्रिक्स के लिए कहना कि 50,000 बच्चा ग्रेजुएट हो गया, 60,000 बच्चा ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता। अब हमारा जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्थ स्टार मैट्रिक है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज अराउंड 90%, राइट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोग एम्प्लॉयबल हो, और एम्प्लॉयबल तब होते हैं जब उनके पास राइट स्किल्स हो। तो वो स्किल्स होना जरूरी है। सो आई थिंक सिवियर बूट कैंप्स रिक्वायर्ड है, जिसमें बाकायदा यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक अवाम जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही है, एंड प्लस एकेडमिया की तो बात हो गई, इंडस्ट्री के अंदर भी जाकर, मतलब ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाकर बताएं कि जनरेटिव डिजाइन क्या होती है, तो आपने कैसे प्रिंट करना है। कल सुबह आपका बॉस जो है वो डायरेक्ट ये काम करना शुरू कर देगा। कल सुबह खाड़ी होगा, वो बोलेगा कि मुझे डिजाइनर की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली मिड जर्नी पे जाता हूँ, वहां से जनरेटिव प्रिंट निकालता हूँ और दैट्स इट। यहाँ से यहाँ सारी चीजें आ गई, दैट्स इट, बिकॉज इट सर्व्स द पर्पस। कस्टमर को डिजाइन पसंद आ रहा है तो उसने क्या लेना देना कि किसने कितनी मेहनत करके बनाया या 1 मिनट में बना दिया, कोई लेना देना। सो हमें इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों साइड पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्लस ये जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपने ये लिया भाई, तो इस तरीके से हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 years। सो अभी हमारा 17th मीटअप हमने किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और हमारी फ्रीक्वेंसी को क्वार्टरली मीटअप्स की है। तो आई लव कि आपने डीप टेक क्वार्टरली मीटअप्स का, तो मैं खुद भी इसका इंशाल्लाह हर क्वार्टर पार्ट बनूंगा। मकसद यही है कि लोगों को बुलाना, चाहे वो चंद 100 की तादाद में हो, चाहे वो हजारों की तादाद में हो, उनको बाकायदा बताते रहना कि भाई एआई पे इस वक्त ये चल रहा है, आप ये काम करते हैं, बराए मेहरबानी ये चीजें सीखे या इसकी तरफ तवज्जो दे। आप नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को भी समझना। आई लव वन ऑफ द थिंग दैट पीपल से, जिया भाई अगेन अपने मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल से कि यार वो सक्सेसफुल इनिशिएटिव इस तरह से नहीं है कि वो बहुत वैनिटी मैट्रिक्स पे चलता है, 50,000 60,000 लोग ग्रेजुएट हो गया। बट आई लव वन ऑफ द फैक्ट दैट शायद वो उस जर्नी का मकसद नहीं था, लेकिन वो ये था कि पूरी दुनिया को, अब ये पाकिस्तान को बताया कि एआई पढ़ना जरूरी है। जिया साहब ने एक डगर लगा दी लोगों की कि टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, प्लस बहुत सारे नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, दे आर ट्राइंग टू प्ले इन द रोल कि यार फ्रीलांसिंग करो, चीजें करो, सीखो। सो आई मीन लोगों का दिमाग बहुत चलता है। एंड अनदर थिंग जो मैं इनसे अग्री करूंगा कि हमारी आवाम जो है ना, वो थोड़ी सी इस तरह से कि हम हार नहीं मानते। आई ऑल्सो करता हूँ कि विहाड़ी से बच्चा कमेंट कर रहा है मिड जर्नी पे, ये वाला इमेज ब्लैंक कैसे होता है, उसको ये वोकेबुलरी कहाँ से, मतलब है कि दे आर सो मच इंटाइज्ड, एक्साइटेड। हमारी यूथ के पास इतनी स्किल्स हैं, अगर उनको छोटी सी एकेडमी, हल्की सी हैंड होल्डिंग मिल जाए तो दीज आर गोइंग टू मेक अ डेंट ऑन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। जितनी हमारी जो बेसिक चीजें गायब हो रही है ना, जैसे हम कंटेंट राइटिंग की बात करें, अमेजन, हम सारा जो है वो ग्रज वर्क करते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर करते हैं, जो $15 वाली बात करी कि हम बहुत इजी काम करते हैं। अब वो सारा काम एआई करेगी, बट अगर एआई करी तो क्या कस्टमर खुद एआई इस्तेमाल करेगा? मैं अक्सर लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मिड जर्नी आ गया है तो इसके बाद तो अपवर्क पे जॉब्स कम हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ मिड जर्नी के बाद आने के बाद अपवर्क पे जॉब्स और आना शुरू हो जाएगी। वो वजह ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं मिड जर्नी पे जाऊँ और इमेज जनरेट करूँ। व्हाई इज पर्सन कमिंग टू अपवर्क? क्योंकि उसकी वैल्यू आवर $100 की है। अगर वो $15 आवर वाले काम पे मिड जर्नी पे खुद सीख के काम करना शुरू कर देगा तो वो कैसे करेगा? तो आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव
इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बूट कैंप्स करेंगे। लेकिन मिड जर्नी पे बैठ के एक आर्टिस्ट 4 आर्टिस्ट का काम तो कर सकता है। Yes. अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। एज फार एज अगर हम एक छोटे से सेक्टर में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट देखेगी, बट देयर इज अ बिग सेक्टर ओपनिंग इन जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। मतलब आपके पास नई जॉब्स आ रही है जो मिड जर्नी आर्टिस्ट थी, तो वो कौन लेगा? अगर मुझे मिड जर्नी आता होगा, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होगी, तो आई कैन टेक दोस रोल। दिस इज व्हाट इनिशिएटिव वी हैव टेकन। हमने अभी रमजान के अंदर एक नई रीस्किलिंग सेशन करवाए थे तकरीबन 3 हफ्ते तक, जिसमें हमने चैट जीपीटी फॉर डेवलपर्स कराया, जिसमें उनको समझ में आया कि यार डेवलपमेंट को कैसे स्किल करना है और एस करना है, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा। अभी हमारे पास काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके कमेंट्स नहीं है कि मैंने लास्ट गूगल पता नहीं कब किया था, अब तो मैं सारी चीजें चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो आई मीन दिस इज अ क्रिटिकल स्किल, कोड लिखना। वन ऑफ द की थिंग्स वी डिड इन आवर कोर्सेज इज एआई को कैसे यूज कर सकते हो। अब क्योंकि एजुकेशन होता है तो आपके पास इवैल्यूएशन इज वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू, इट्स मोर ऑफ अ क्रिटिकल थिंग। बट उसके साथ साथ आपको ग्रेज वर्क भी मिलता है कि आपको हर एक की एक कॉपी ऑफ नोटबुक देखनी है, उनको चेक करना है एंड एवरीथिंग। दिस टाइम वी एक्सपेरिमेंटेड कि एआई को हमने रूब्रिक दिया और उसके नतीजे में उसने हमें चेक करके दिया, एंड देन वी डिड अ सैनिटी चेक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या उसके ऊपर उसने क्या क्या किया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, छोड़ तो नहीं दिया। इवन क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड नोटबुक्स, we give AI a prompt that created personalized Jupyter notebooks for each student for 12 case studies. I cannot design 12 questions in 12 case studies, but AI can. So I start pressing continue, and that's it. तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं एआई के जरिए, और रीस्केलिंग को भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली So is there a system if somebody wanted to learn AI like on their own without the help of a teacher? Is there a system available जिसके ऊपर जाके आप prompting करके खुद ब खुद सीख लें? I mean, one of the coolest system is chat GPT, बट उसके अलावा भी सिमिलर बहुत सारे सर्विसेज हैं हमारे पास, एंड उन सर्विसेज का मैं नाम लूंगा तो फायदा नहीं, क्योंकि ऐसी 1500 सर्विसेज हैं। सो दिस इज वन ऑफ द चैट जीपीटी आपको वो चीज तो नहीं सिखा रहा है, अगर एक डॉक्टर को चाहिए कि मैंने डॉक्टर्स को जो एआई सीखनी है, चैट जीपीटी आपको वो सिखा देगा। Let me give you an example. So recently Google released one of the projects where it actually scanned medical images and it gave its own outcome of what the radiologist does. Then the radiologist asked and challenged कुछ questions उससे पूछे कि भाई ये क्यों, ये मुझे बताओ, and it started defending it कि मैंने ये इसलिए डिटरमाइन किया, मैंने ये इसलिए डिटरमाइन किया। I think this is one of the key things that has actually enabled the radiologist। ये भी एक रीजनिंग हो सकती है, या ये भी एक तजाविया है देखने का। I mean this is the intelligence where people can play। अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट कराया था ज़ैबिस के अंदर, how AI is reshaping education. So we had so many examples where AI is actually enabling personalized education in a personalized sector। मतलब ये कि खान जीपीटी, अब वो बच्चा पूछ रहा है कि मुझे ये मैथ्स की इक्वेशन है ये समझाओ, अब उसने उसका पोर्शन पूछा कि मुझे ये वाला पोर्शन नहीं समझ आ रहा है, ये समझ में आ गया। सो इट्स ओनली आंसरिंग द पोर्शन। हम सबका मसला ये है कि हम टेक्स्ट बुक जब खोलते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो दिस इज व्हाट खान जीपीटी इज सॉल्विंग। तो बहुत सारे नए सोल्यूशंस आ रहे हैं जो कि एआई ड्रिवन है और पर्सनलाइज प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन। तो हेल्थ केयर है, फाइनेंस है। Me personally, I wrote a notebook on how AI is changing finance. So I did a 9 shift paradigm जहाँ पर आपके पास equity valuation है, accounting and finance है, आपके पास different bookkeeping है, ये सारे areas मैंने ChatGPT से करके दिखाए। And I actually compared it with the ACCA code of conduct कि भाई ये इसी के मुताबिक ये decision सही दे रहा है। Then people were amazed कि यार फिर तो हमारी जॉब पक्की गई। दिस इज व्हाट वी डू। मतलब वो हम नॉर्मल वैल्यूएशन करेंगे, हम वही एनपीवी निकालेंगे, वही सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो सारा काम तो चैट जीपीटी कर रहा है वही। तो आई मीन दिस इज वेयर वी नीड टू रीस्किल पीपल, teach them how to use different tools. Mid journey is one of the creative things. Another boom is coming is from the film industry, जो आपने बात करी runway ML. I mean the Gen 1 and the Gen 2, I mean they are just out of the world. मतलब I mean मैं ये सोच रहा था कि रनवे पे बैठ के ना मैं एक टाइटैनिक का प्लॉट बनाता हूँ कि I mean I would pay tribute to those who have passed away in the recent incident of the Ocean Gate. But what in the earth if I wanted to create a sci-fi movie that everyone has considered them they're gone, but in the ocean they are living alive. So if I wanted to create a movie, I'll try tonight's time on Runway ML to create a short skit of a movie
what if a human would have grown up gills of a fish and started living in evolved. So I mean this is where creatives are trying to go. So ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारी यूथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. ये सारे हमारे दोस्त जो टिकटॉक वाले हैं और सारे हैं, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ इनको डिस्ट्रैक्शन मिली हुई है. So I mean, these guys are the same who would come to Mid-Journey, Runway ML, and every other thing that is coming. Another thing is the 3D animation space, where I see prompt to real-world 3D conversion. So in the entire OpenAI, Open Engine, and one of the key tool used, मेरे शायद से नाम निकल गया है, जो कि मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है. So that is being Unreal Engine. Does this also mean again? Maybe I think a start if we could we'll just go through round and then you'll open up. Hassan, does this also mean that we can do now bigger things with smaller number of people? We can do a lot more number of things. I don't know, bigger. We जैसे मूवी हो, आप वो कह रहे हैं कि जी पूरी मूवी AI जनरेटेड होगी, राइट? तो अब हम मूवीज बना सकते हैं. अब तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं रहा जो पहले में था कि हमारे पास मूवीज बनाने के पैसे. They won't be probably as good as That's the point, and I think that's the point. कि ChatGPT जो एक एवरेज बंदा लिखता था कंटेंट राइटिंग में, एक ब्लॉग लिखता था, टिपिकली जो पाकिस्तान की कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे एक एवरेज वर्कर दिन में 6 से 7 आर्टिकल्स लिखता था. So you can understand how much research they go into each article. So now वो 60 to 70 आर्टिकल्स लिख सकता है with ChatGPT. बट उनकी क्वालिटी तकरीबन वो 6-7 आर्टिकल्स के बराबर वाली ही होगी. तो चैट जीपीटी या जितने भी जनरेटिव इंजन हैं, इनमें जैसे पहले कहते थे, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन और द पर्सन बिहाइंड द गन. यहाँ पे भी यही है. सो इट्स नॉट द इंजन इटसेल्फ, इट्स द पर्सन यूजिंग द इंजन. सो इफ यू यूज इट देन यू, जो बात पहले हो रही थी कि हमारे पास क्रिएटिविटी की कमी है, दोनों लोगों ने बात की कि हमें वो सिखाना चाहिए. तो आई थिंक वो बिल्कुल एक डेफिनेटली अगर हम एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज कर लें थोड़ी देर के लिए, तो आई डोंट नो स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करना कितना आसान होगा, टीचर्स को रीट्रेन करना टू बी एबल टू टीच क्रिएटिविटी कितना आसान होगा. बट आई थिंक वन थिंग वी कैन लुक इनटू जस्ट एज एन इमेजिनेशन एक्सरसाइज. 1980s में पर्सनल कंप्यूटिंग का रेवोल्यूशन आया, वी मिस्ड इट बिकॉज़ वी डिडंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू पार्टिसिपेट. 90s में इंटरनेट का आया, ग्लोबल इकोनॉमी, वी मिस्ड इट बिकॉज़ वी डिडंट हैव द इंटरनेट. आई थिंक एआई का जब आ रहा है तो हमारे पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है. एआई में कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट हमने सारी आउटसोर्स कर दी बिग कंपनीज को. तो यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सेक्टर लेवल पे कोई बहुत ही क्रेजी किस्म का कोई इनिशिएटिव हो, एंड इट्स अ नेशन वाइड, इट्स लाइक अ मूवमेंट, इट्स लाइक समथिंग दैट टीवी पे, टेलकोस, इट्स लाइक अ मैंडेट, जैसे हम लोग कोविड में करके दिखा. देयर बीन समथिंग दैट वी हैव डन राइट. अब पाकिस्तान में भी इंटरनेट इज मच बेटर देन सो मेनी अदर इकोनॉमीज व्हिच यू कैन कंपेयर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्सेस, बहुत सी बेहतर चीजें हैं. अगर हम कोई कोविड टाइप का कोई रिस्पॉन्स जनरेट करें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हम कहेंगे जी टीवी पे भी हर न्यूज चैनल को एड्स भी इसी पे चलाने हैं, टेलकोस भी मैसेजेस देंगे. जब मैं किसी को कॉल करूंगा तो यही मैसेज आएगा, आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करके अपनी दुकान का खाता बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. अरे स्कूल्स के अंदर भी स्पेशल कोर्सेज हो, इंसेंटिवाइज किया जाए कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को, प्रोफेशनल्स को, मतलब एक सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग कोई ऐसी कोई मूवमेंट हो जो पूरी की पूरी नेशन को इसके ऊपर लगा दे. आई थिंक हम बाकी आउट कम्पीट भी कर सकते हैं अपनी सिमिलर साइज मार्केट्स को. हम कोई क्रेजी किस्म का आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं. आप सबको छोड़ दें, मुझे बैंक पे I'm not really gung ho about Maybe वही लोगों को इस मूवमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए. about what the country can do. I'm saying, can you, with 50 people, create a movie that can do something Okay, so outside? Right? yes, अगर ये हमारा जो एक प्लान है, हम जैसी बहुत सी कंपनीज का ये प्लान होना चाहिए और है भी, अगले 2 से 3 सालों में. और मैं काफी कॉन्वर्सेशन टीम के साथ रेगुलरली करता हूँ. मैंने जस्ट लास्ट मंडे हमारी टीम मीटिंग हो रही थी, मैं यही बात कर रहा था. मैं कहता था अगर हमने 2 सालों में हर बंदे से 5 टाइम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई तो हम आउट कम्पीट हो जाएंगे बाय समबडी एल्स फ्रॉम इंटरनेशनली. तो यस, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, इन टर्म्स ऑफ स्केल, 5x, 6x, 7x आपका आउटपुट होना जरूरी है.
और उसके लिए AI एनेबलमेंट की जरूरी है, टूल्स के साथ कनेक्ट होना जरूरी है. फॉर इंस्टेंस हम लोग माया की पाइपलाइन में काम करते हैं, अनरियल में काम करते हैं. इस वक्त सिर्फ चैट जीपीटी की लोग बात करते हैं. थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ हैंड. Auto prompting is a thing now. Auto prompting is when you don't even have to think about the prompt. So just तेजी से चीजें change हो रही हैं. Just to keep updated with what is happening in the AI space, I think AI specialists आपको hire करने पड़ेंगे. हर एक आम सी कंपनी से बंदा रखना पड़ेगा, भाई तुम जो ना तुम भैया देख करो कि AI में क्या हो. और मेरी फील्ड से रिलेटेड चीजें जो है ना वीकली रिपोर्ट करते रहो, प्रेजेंटेशन में 2 स्लाइड चला करेंगी और वो दिखाएंगे कि एआई की फील्ड में मेरी कंपनी से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, जिस तरीके से जनरेटिव इंजन्स में ऑटो प्रॉम्प्टिंग की वजह से जो स्केल ऑफ चेंज है, आई थिंक उससे आप ग्रैपल नहीं कर सकते. लाइक समबडी, आई कम फ्रॉम अ कॉम्प्यूटर बैकग्राउंड, आई फील डिफिकल्ट जस्ट टू कीप अप विद अ कन्वर्सेशन विद समबडी लाइक हिम. And you wouldn't feel that in your, in your 40s. You would feel that in your 60s. But now we feel that in our 40s, and अगले 5 सालों में irrelevant हो जाएगा. Conversation हो रही है कि AI के ऊपर I wouldn't be able to participate क्योंकि I just can't keep up. It has become so difficult. So I think organizations को अपना एक एजेंडा बना लेना चाहिए कि immediately dedicate somebody, dedicate maybe the leader, the top leaders, dedicate some time, weekly, monthly, attend courses. Find a way to bring forcefully AI into everything we do. क्योंकि enablement जो है ना वो अगर आपने नहीं किया, that's the minimum talking about. आप अभी तो बात हो रही है कि जी वो algorithms हम कब लिखेंगे, और आपने सवाल पूछा कि जी इसके application पाकिस्तान के लिए product development होगी, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा. मैं तो pure survival strategy में कह रहा हूँ. Survival strategy में we have to have a very gung-ho strategy of investing time, resources and attention on just bringing AI with whatever we do, छोटी छोटी चीजों के ऊपर. और कंटेंट इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड. और इसकी रीजन ये है कि AI, अभी मैकेंजी का आर्टिकल आया, 700 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी. सो देखें AI ने ग्लोबली जॉब्स को खत्म करना है. वो नई जॉब्स आएंगी, वो दैट्स अनदर आर्गुमेंट. पीपल आर सेइंग कि इट्स अ प्रिंटिंग प्रेस मोमेंट, वेदर इट इज और नॉट, आई डोंट नो. हो सकता है जॉब ना रिप्लेस हो, मे बी यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाएगी, एंड देन मैरिजुआना जो है वो लीगलाइज हो जाएगी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एंड वी वुड बी सिटिंग एट होम वाचिंग नेटफ्लिक्स मूवीज, कंटेंट क्रिएटेड बाय AI engines. That's quite a possibility in 10 years. But I think इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उन लोगों ने अगर AI को अडॉप्ट नहीं किया, और जिस तेजी से AI के साइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर उनको हमने इंटीग्रेट नहीं किया तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम compete कर सकें इंटरनेशनली. और जस्ट वन एग्जांपल कि जो छोटे छोटे टूल्स हैं, कंटेंट की इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था, जिनकी अपनी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है. वर्चुअल रियलिटी इज नाउ अ थिंग. एप्पल हैज इन्वेस्टेड द न्यू प्रोडक्ट $3,500, but it looks cool. In the next 5 years, I think we will be wearing artificial, AR-based goggles. And I think वो product भी mainstream हो जाएगा eventually. People are saying computing भी उससे होगी, interface भी उसी से होगा. So content generate करना किसी न किसी तरह वो digital age की सबसे बड़ी चीज होगी. वो whether it's text-based content, whether it's image-based content, video-based content. और वो सारी की सारी चीजें AI से अच्छा कोई नहीं करेगा. There'll be a man, there'll be a person, there'll be a woman handling that AI engine. बट कितनी स्पीड से कर सकते हैं. आपने एक सवाल पूछा कि अच्छा जॉब्स कम हो जाएंगे. अब एक्चुअली पता हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दिस इज जस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ. वन ऑफ द सेगमेंट्स वी लुक इनटू, वहां पे ऑलरेडी जॉब्स आना शुरू हो गई. वी आर लुकिंग फॉर अ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट विद AI skills, because now they're willing to pay 5 times less than what they were willing to pay for somebody for a logo design or a GIF-based video that does an explainer. So something that they were willing to pay $200 a minute for, they say we want to do it for $50, and we want somebody to do it with AI. So is tarah ki already an Upwork and freelancers, these tools are very good pattern of where the sort of the gig economy is headed, और किस तरीके से people participate करें. तो ऐसा बंदा जो कि somebody who's he has a robotics program for schools, तो बच्चों को robotics करवाता है. He's creating an animated movie to help students. So you wouldn't imagine somebody to run a robotics program, to invest in animation,
क्योंकि अब एनिमेशन इतनी मुश्किल और इतनी एक्सपेंसिव थी, बट दिस गाय नाउ थिंक्स यार विद एआई आई कैन डू इट. सो वो अपवर्ड पे कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से एनिमेटेड स्क्रिप्ट एडोबी एनिमेट के ऊपर ऑटो रिग करके बना दे, जो कि मोशन कैप्चर के साथ मुझे आप रिग कैरेक्टर्स दे दो. मेरे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, हमने स्टोरी लिखी हुई है तो हम बच्चों को रोबोटिक्स सिखाएं. सो ये एक अपॉर्चुनिटी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो इस तरह के लोग जंप इन करेंगे. पीपल लाइक हिम हु वांट्स टू, ही सेज कि मैं $100 स्पेंड कर सकता हूं, मुझे 5 मिनट का एनिमेटेड शॉर्ट चाहिए, आई जस्ट पुट इट अप ऑन YouTube. एंड देन पीपल 2014 में YouTube ने स्टैटिस्टिक दी थी कि 2020 में 90% ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ कंजम्पशन विल बी वीडियो बेस्ड, और दिस हैपेंड इन 2018. Now internet bandwidth consumption is almost 99% video. So every platform is on video. We consume some hours of video. We will consume 3 or 4 more times of video. We will have multiple devices with multiple videos. We'll just see iske thodi si dekhi, iski thodi si dekhi, and that content somebody will sponsor and people would want to monetize. So I think content creation industry की specific domain में अगर देखें तो बहुत opportunity है, but उसको कैपिटलाइज भी तो करना है. So Sara, how do we train a lot of doctors to become doctors plus AI? Doctor plus AI. I think it, so I'll tell you about my journey, how when I entered into medical college to kya ho raha tha, and how it has changed and how it has the ability to change. So when I entered into medical college and when I saw my first kind of anatomy class, how was taught anatomy is there was a huge tub with formalin in it, and there was a cadaver, which is a human body, in it. It was taken out and put on a slab, and everyone studied it, and everyone cut it out, and it was pretty barbaric, according to me, but it was a norm. Everyone used to do it. Now, from that point to when I went to my university around 8 years later, which is 4 years from now, they had changed that into dummies. So now that barbaric thing at least doesn't happen anymore. They have dummies and they have simulations. However, it has not moved beyond that. What's happening in medical colleges now, when I talk to a lot of young doctors who are joining my network, is the questions are not changing. How they answer the questions are changing. So yes, they have moved from like MCQs and ECQs, from these essay questions based on scenarios. But how are they answering those scenarios is using ChatGPT. They're not getting a question paper that is simulating different patient experiences or scenarios and asking them to use their mind as a physician and calculate what they need to do and what they not need to do. So I think the first change that needs to happen, instead of writing that paper coming out of ChatGPT, the questions need to come in a manner that they present 10 scenarios of maybe the same disease, of the different symptoms, different disease patterns, different predictability in terms of genetics, and ask them to see, okay, इस scenario में आप क्या करेंगे, scenario B में आप क्या करेंगे. अभी medical colleges में होता ये है कि when you start from the first 3 years you study, and the 4th year they take you to the clinic, and they show you from a distance. They don't let you touch the patient. It is only in the 5th year that you touch the patient as a house officer. Now imagine if you had virtual patients in the form of simulations. You can start touching those patients from your 2nd or 3rd year onwards. So by the time you're interacting with actual patients, your experience and your knowledge based on that simulation is much more than when you go into a patient. And I saw the most inhuman experiences as a house officer happening to patients, where we're trying to put NG tube into a patient and we don't know how to do it. Now, if we had something to tell us 3 years before, yeah, is that an NG tube that'll be on a simulator, that would have been remarkable, but it doesn't happen. So I think from that perspective, I think in terms of healthcare, what I see is there are a lot of patients that require more doctors. So it is not about lesser doctors due to AI, but AI will enable better accuracy and skill in healthcare, which is missing. Even if you go to, all of us go to doctors, and there's a doctor by sitting. When you go to a doctor, it's a very manual interaction with the doctor, right? आप जाते हैं, डॉक्टर साहब आपकी वही हिस्ट्री पूछते हैं, फिर वो एक लंबा सा नोट बनाते हैं, उसमें वो 20 मिनट खाते हैं, फिर आपकी इधर बातें करते हैं. जब आप बाहर निकलते हैं तो वेटिंग एरिया में 40-50 पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं. Imagine if you had natural language processing available, कि for example डॉक्टर साहब ने जो नोट बनाना है वो 5 मिनट में आए कि थ्रू जल्दी बन गया, which is essentially 90% the same thing for every patient, with some individual things for different patients. And then he or she will have the ability to see more patients in lesser amount of time with better accuracy.
And every time the patient comes in for follow-up, they can keep applying the same method. साल पहले हुआ. This is not right. Yeah, is the method. Patient को कैमरा के सामने खड़ा करो और इसे बता दो जिसके काम से. Yeah, but that is one part of it. या किसी भी तरह से whatever inspection. No, but generative AI is a lot than just a virtual assistant standing in front of you. Generative AI researchers who help at that for data augmentation. There's so many incomplete data sets available all across the country where people don't have patient data to run researches on. And जब हम किसी भी researcher के पास जाते हैं medicine में, 90% of them say that we don't have data available to create a disease pattern of a certain disease, and that helps you augment data. That's one application of it. Yes, in doctor-patient interaction, one of the applications of generative AI is to create a virtual assistant that can see you in the same way as a real doctor would see. But then even if we need to start today, if I had to start today, I would not start from creating medical virtual assistants replacing doctors. I will increase the precision of healthcare that is being given by a doctor individually into something which is more standardized. Because even today, as we are handling many diseases, Dr. A is handling cardiac failure completely differently as Dr. B, as Dr. C, as Dr. D, because they don't have a data set to tell them how accurate their diagnosis and their treatment can be. So for me, I think if I had to start from medical colleges, and I think the best places to start with this is medical university colleges and which are affiliated hospitals that have immense data available, but they never use it for anything except their own research. So I would start from there. If I flip this to the allied healthcare worker class or to the nurses or to the technicians, I think for them, they don't even know what technology is. They have never been taught how to record data virtually and not on a paper. So I think for them, exactly. For them, the first bit is to digitize the data that they're recording, and they're all recording data. Healthcare workers in Pakistan are recording all cases of post-abortive care, all family planning cases, but it's all on paper. It is all spread here and there with no automation. So I think there we need to start in very basic. It's a very, very manual system right now. There we need to digitize data, then make them technology friendly, then bring them to a point where they understand the basics of AI. But at least for medical doctors, I think with virtual patients, with simulations, with data augmentation, you can make high quality medical healthcare. Without experience, through simulation, you can get high quality healthcare earlier before they become an experienced doctor. Yeah, so it's interesting. I mean, I was doing a course during my PhD. I was doing a course on health quality assessment. उसमें एक दो sessions they were about variation in doctor practice, regional variations in doctors. The huge variation between hospitals. एक जगह पे C section का rate X है, दूसरी जगह पे Y है, एक जगह पे फलान डिजीज में क्लीन का rate X है, दूसरी Y है. So and the doctors in the class treated it as if this was normal, right? This is how we are trained. Certain medical school is good with this, certain medical school is good with that, certain medical school is good with this. I'm an aeronautical engineer. I was sitting in the room and I said, why is this happening like that? I mean, when airlines have very similar, when airlines can have, we also kill people, you also kill people, right? So the only difference is when a plane crashes, 300 people die. When a doctor kills, he kills, 1% at a time. But they also kill 300 people. So ये practice variation नहीं होनी चाहिए. ये practice variation खत्म हो सकती है, लेकिन for some reason that within the DNA code of the doctors can be ऐसी So it's interesting. One thing before we start, I think one thing that I've seen is again, basic access is such a big issue. Even getting access to a doctor for many in this country, if God forbid you end up with a rare anomaly here, or in most part of the world, if you end up with a rare anomaly, if you end up with a autoimmune disorder, because you don't know how to handle it as a doctor even, how do you learn that? Now, होता ये है कि आप अभी जिस तरह पेशेंट हैंडल होता है, मैं फला डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे इस डॉक्टर के पास भेजेगा, वो मुझे उस डॉक्टर के पास भेजेगा, and then we try to locate a doctor globally. I've done this for a patient of an autoimmune disorder that I knew कि हमने चाइना में एक डॉक्टर ढूंढा that was working on this research. But imagine if you create a virtual simulation of a patient for rare anomalies and you start running those in medical colleges.
you'll have so many more doctors who will be experts much earlier. Simulation is one thing, just data sharing. I mean, PMDC should have a email server that goes out when something new comes up. Right? जब कौन सी एयरलाइन का जहाज था, इजिप्ट एयर का जहाज था, किसका जहाज था, when it crashed in the Atlantic, a notification came out to all the airlines, this aircraft with this age stopped flying until we figure out what happened to this aircraft, right? And they found out कि वो 10,000 hours के बाद उस aircraft में fuel tank में एक harness पे sparking होती थी, जिसकी वजह से the whole aircraft exploded in mid-air. And when we went and found out, looked at our aircraft, we found out that 10,000 घंटे के बाद हमारे भी fuel tank में वही हो रहा था. Right? So that's how you control this kind of thing. You provide information. I mean, in this case, I had a jahaz पूरे रोक दिया आपने because this is a big tragedy that can happen. In the case of doctors, at least when something rare comes up, you report to everybody कि यार ये हो रहा है, right? इसको इस तरह से देख. And that should address a lot of these practice variations. And I think report Experience is one thing, reporting is another thing. Yeah. Report होता है. Whenever there is an epidemic, report जरूर होता है. But how do you deal with that situation? Unfortunately, if you take COVID example, I think our doctors learned very quickly and they did a very unfamiliar approach of handling COVID, which actually worked for us, for all of us, largely. But they weren't trained to do it. And they were only able to do it because they didn't have a precedence movement. How do you scale a one-tech model and make it 1,000 tech people? I think मेरे ख्याल में there is a problem, to say it as an understatement. There is a product market misfit between Pakistan, see all the structures, and the digital age or the age of AI. There's a very big product market fit. और उसका fundamentally हम किस तरह solve कर सकते हैं? सबसे पहले product market fit है कि आपके जो लोग हैं, जो decision makers हैं, वो इस तरह की बात सोचते हैं कि ये 1 million लोगों को train करना ही आए हैं. Fundamentally flawed way to think about it. You're focusing again on quantity, not on quality. ये आज की बात नहीं है. Typically आप किसी government servant को दे देंगे, वो यही करेगा, मुझे 1,00,000 बंदा दे दो, मुझे 1 million बंदा दे दो. But actually, it's about quality and not about quantity. And I always say to मेरी vocational training में भी हमेशा लड़ाई लगी. मैंने कहा यार, if you get quality first, you can scale it, and you will get quantity, you will get sustainability. But if you don't get the quality first, आप 1,000 जितना बंदे भी कर देंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी. There is a program जो कि सिंध में हुआ था, उसमें 18 बिलियन रुपए खर्च हुए थे over a period of 6 to 8 years. उसमें apparently 2,68,000 बंदे train हुए थे skills में, और most of them they can't track where those people are. And but मैंने भी कहा था अगर आप 68,000 लोगों को properly train करते हैं, सिंध की तकदीर बदल जाएगी. So clearly the thing didn't happen. The running after quantity, compromise quality, or at least program objectives. So एक तो हमारी जो thinking है, the people who are decision makers, bureaucracy otherwise, is the wrong thinking when it comes to AI. They have to focus on quality rather than quantity. हमारी social structure में भी एक तरह से quantity और quality पे बहुत किया जाता है. हमारा सबसे बड़ा social safety net क्या होता है? बच्चे. So the more kids you have, the more protected you feel. And it's not about how the quality of life you can give to a kid. It is about how many kids you can have who can support you in your old age. This is a very big social dynamic that we have. And so this in itself goes against the concept of how do you invest. अच्छा, अब आगे हम बैठे हैं, मैं नहीं कि वो इस्तेमाल करता हूँ. इन्होंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान में in order to give a good quality education, you need an undergraduate education which costs 400,000 to 500,000 rupees a year. For a whole degree. 5 million whole degree. नहीं अब हो गया होगा. मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे. 4 साल पुरानी बात. मैं इनकी बात Around 20 million. So, and you're talking about an average education, जो कि you need to get a person's skill to get a job. Affordability is probably at 1 million. Okay? So that's why you have a lot of universities that give you education at 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh rupees a year for an undergraduate education. You have a huge gap. And the gap is opened up in terms of quality and in terms of affordability. Because आपके बंदे बहुत हैं और आपके पास आपने एक मुल्क में wealth creation नहीं की है कि वो 5 million जो कि affordable होना चाहिए. A substantial proportion of people in Pakistan should be able to afford it on their own. But हमारे यहाँ economic wealth generation नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो नहीं है. जिसकी वजह से हमारी
अफोर्डेबिलिटी 1 मिलियन पे है, क्वालिटी 5 मिलियन पे है, ज्यादातर बच्चे 1 मिलियन पे ट्रेन हो रहे हैं और दैट्स व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयबल और दे आर नॉट एम्प्लॉयड. So the question is that you have to control the population, but you also have to think differently and invest more. दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ again the other thinking is somehow centralized bureaucracy. हम लोग we love centralized bureaucratic large systems. हम लोग समझते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट नीचे से बैठ के एक बहुत बड़े सिस्टम को सेंट्रली कोऑर्डिनेट कर सकता है. आज मैंने लिखा था, मैंने कहा probably we have more people in our BPS 20, 21, 22 the people who think they can do it than Stalin के पूरे ब्यूरो में सोचते होंगे. हम हर चीज कहते हैं गवर्नमेंट करें. Government development is never government. We think our development is government led and government executed. It is never like that. It is government facilitated and always private sector led. So ये जो initiatives कर रहे हैं at a much micro level, they need to be done. That ये जो government आते हैं कि हम 10 मिलियन लोगों को ट्रेन करेंगे, 1 मिलियन ट्रेन करेंगे, this is a distraction. अब वही पैसे आप ले लें, आप 50 लोगों में आपकी तरह के प्रोजेक्ट में बांटे, उनमें से शायद 4 और 5 सक्सेसफुल हो जाए, उनको बाद में स्केल करें, probably have better way to succeed. So ये जो है एक और एरिया है जहाँ पे हमारे अगेन प्रॉब्लम मार्केट फिट है, जहाँ पे थिंकिंग हमारी गलत है, हमारी थिंकिंग जो है needs to change. Then the other area again going back to engineering and humanities, art versus science. Somehow medicine में और people in Pakistan, उसका example है हमारे leader भी हैं जो कि I won't go into that because Akhtar gets we didn't go on about it. I was very excited about it. कि हमारे यहाँ somehow we think कि एक human बंदा है, he is उसमें एक साइंस, उसके अंदर एक आर्ट है, हेल्थ और शिफा एक तरह से आर्ट है, और उसके हाथ में है, डॉक्टर हाथ लगाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे. हमारे साइंस पे लोग बिलीव नहीं करते, यानी डेटा पे लोग बिलीव नहीं करते. दिस इज व्हाई डॉक्टर साहब वाज सेइंग दैट, एंड दैट अनलेस you change that thinking, you will always rely on this human touch interface. And the human touch interface में होगा क्या? Variation of outcomes. अच्छे डॉक्टर के पास चले गए तो बहुत अच्छा होगा, बुरे डॉक्टर के पास हो गए तो बिल्कुल कसाई की तरह की ट्रीटमेंट होगी. And we need to get out of that thinking, and that is across the board. लोग हमारे, there's much more emphasis on human interaction, human touch model rather than relying on data or relying on sciences. So ये एक ऐसी area है जहाँ पे हमें we have to move away from a bit of art, we have to move towards science. दूसरी बात आपने बड़े इंटरेस्टिंग बात की थी कि होना चाहिए, and this is probably a plug-in for animation, कि किस तरह हम इस चीज को स्केल करें या वो करें. तो एक ड्रामा होता है. सो इंग्लैंड बिकमिंग अ सुपर पावर had a lot to do with a woman called Elizabeth I. Queen Elizabeth I was a great monarch, great lady. उसने पूरे मुल्क को सीधा कर दिया और फिर यूरोप के साथ लड़ाई की. पर उसमें एक और बंदे का भी हाथ था, which people don't realize, and his name was Shakespeare. Shakespeare was immensely instrumental for creation of the British Empire. उसके जो ड्रामास थे, including Henry VIII, was watched by 1/10 of London. And वो ड्रामास के थ्रू इतना इन्फ्लुएंस कर देता था कि इंसान के दिमाग में he created a new identity. So if you look at Henry VIII and some of the other dramas that he did, created a new British identity. उस जमाने में भी ब्रिटेन में हो ये रहा था कि लड़ाई हुई थी रिलीजन की. आपको पता है कि वो कैथोलिक चर्च से अलग हो रहे थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड बन रहा था. There was a lot of schism. जिस पर हमारे हर वक्त कोई ना कोई लड़ाई चल रही होती है रिलीजन के ऊपर. आइडेंटिटी ऑलवेज इन फ्लक्स. उस जमाने में भी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा फ्लक्स थी. सो हेनरी IV और इस तरह के ड्रामास के थ्रू शेक्सपियर ने he forged what it means to be a British citizen, what it meant to be a British person, and formed the nation's identity, which then eventually led to all the innovation and all this thing that led to the British Empire. I do believe that dramas have a huge influence on people, particularly if they're not about soft story about a woman being a victim, yeah, a woman victimizing her. देखने की कोशिश होती है. But I think अगर आप ड्रामा करें, it shows the power of AI in changing, an ordinary person, because that is the potential. कि यार आप, you could be a big person, but if you have some, you have an innate talent, you can overcome that through, learning this and create huge amount of wealth. I think that is a huge way to do that. Influence, in उसी तरह होना चाहिए. हम टीवी देखते रहते हैं और वही करते रहते हैं जो टीवी पे होता रहता है स्पर्शा. दूसरी बात मेरे जो है लास्ट
10%, 20% लोग this सब लोग हमारे इस टाइप के प्रोग्राम वगैरह होते थे जी आज तक सब टैक्स में तब एकदम याद फोन करना स्टॉम मुझे भी 2000 मासिक रिजल्ट stuff बिल्कुल we've done that. coming to just my last point is that I think अब जो होगा वर्ल्ड में वो होगा कि ये किस तरह हम फैला सकते हैं. So ये पाकिस्तान है too big. टू बिग कंट्री. अगर सिंगापुर टाइप का होता था कुछ होता था. मेरे ख्याल में फ्यूचर इज ऑफ सिटी स्टेट्स, ठीक है, ऑफ कॉलोनीज. सो तो एलिसियम टाइप की आप एक कॉलोनी बना रहे हैं जहाँ पे बंदों को रखें, एंड देन यू हैव पीपल हु आर एआई ट्रेन्ड और एआई enabled and this, and then you try to experiment, and then you try to scale that experiment. I mean, I'm just being a bit provocative, but even in a way, even think about city state Karachi, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान कर दिया. Society, why not? Maybe Barrier Town could be a society away from Karachi. It looks much better than Karachi. All the people can do that. So cities can create ring fence around the society that can do that, and hopefully they can scale, because the gap, as I said, between the thinking that we've had and the thinking that is required is very big. Thank you. Great, wonderful. I think great comments, all of you. So I want to open this up. I know it's a bit late, but we started late. So anybody from the audience, Great. And as a nation, we try to follow a topic. I always try to create new things. So मेरा सवाल ये है, नेशन एज अ सक्सेस स्टोरी है. 90% एम्प्लॉयमेंट, कोई यूनिवर्सिटी क्लेम नहीं कर सकती आज. 90% एम्प्लॉयमेंट is a big thing. If we were to tell you, Mason, tell us how we can scale it. ये तो मैंने पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया. तो वो मैं वापस पूछ लूँ, शायद वो मेरे लिहाज में जवाब दे दे. क्योंकि देखिए इस वक्त there are different groups, university groups that we are part of. There are different groups, there are different initiatives at the university level. There is a group called Ponder Alliance. We're very, very keen to understand how we can make the graduates of today employable. ठीक है? And this seems like a very quick fix तो नहीं बोलना चाहिए, but quick fix है. It is, ठीक है, वो किसी चीज में भी graduate हो. जैसे हमने कहा ना, finance, AI enabled finance professional, AI enabled this professional, AI enabled that professional. What can we do? Because boot camps is a very quick way. And then again, वही वाली बात है, the first 1,000 with quality will create the next 100,000, and the next 100,000 will have that effect. I think ये discussion हो रहा है. So you may have the solution where you can tell us how. Telling universities कोई आगे solution दे दें. Maybe I can take it to that forum and discuss with them. कि ये solution है, somebody who has 90% employability is telling us to do it this way. एक ही चीज मैंने मेनली सीखी है, वो मेरी ACC की जर्नी थी. आई यूज्ड टू रिमेम्बर कि वो हमारे टीचर्स जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम करते थे, वाकई में ऑडिट करते थे और चीजें देखते थे, उनका जो ऑडिट पढ़ाने का तजुर्बा था वो किताब से नहीं पढ़ाते थे, वो तजुर्बे से पढ़ाते थे और किताब से लिंक कर देते थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ, और वहां में सीखने मिलता था. और वो मुझे याद है, वो कंटेंट मुझे पेपर में याद नहीं करना. मगर हमारी यूनिवर्सिटीज में तो टीचर्स सिर्फ टीचर है ना, वो तो वो रिसर्च करता है, वो काम नहीं करता, वो रिसर्च करता है. I mean, हाँ, ये तो एक ये भी एक anomaly है, but he's 90% employability is something music to my ears. Yeah. So I mean, this is the only thing that I personally adopted in my own academy, where all the instructors are coming from a background where they have worked in 4 to 5 years, not only in a generalized subject, but जो वाकई में वो पढ़ा रहे. मतलब ये कि अगर हमारे कोर्स के एक मॉड्यूल के अंदर पाइथन पढ़ाया जाता है, तो वो बंदे ने 5 साल 6 साल पाइथन पे बाकायदा काम किया है. वो बंदा इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ाएगा तो वो ये भी बताएगा कि कब लिस्ट बनानी. वो जो क्रिएटिविटी है ना, हमें ये समझ नहीं आता, ये फला जैसे प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, ये कब इस्तेमाल करनी. बच्चों का जेनजी का सवाल ये है, ये क्यों पढ़ाया जाए, ये कब इस्तेमाल करनी. तो मुझे जरा मकसद बताता हूँ. तो वो अप्लाइड मैथ्स वाली जो बात करी थी ना, अगर काश हमें भी मैथ्स ऐसे पढ़ाया गया होता ना, कि अगर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें स्क्वायर कट निकालना था एक जगह से. सो ही अप्लाइड एन इक्वेशन, वो दिखता मेटल का कटर था ट्राइंगल शेप, बट जब वो चलता था तो वो स्क्वायर बनाता था. दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज, राइट. तो अगर मैथ्स ऐसे पढ़ाया जाता
तो आज बच्चे को भी क्लियर होता है कि अच्छा है इस जगह पे ये इक्वेशन हमने वो वाले जमाने में पढ़ी थी तो इस्तेमाल कर सकते मैं हैं। ये बात एक तो, मिनट में यहाँ से कट हाँ। मैं शायद सवाल समझा दूं। मैं ये नहीं कह रही मैं सिस्टम चेंज कर सकती हूँ। HEC is itself it has a way because that's the way the teachers But one of the key intervention post IT post parallel system. What would be that parallel system? HEC needs to recognize one of the key things that I personally say कि यार कई मेरे ख्वाबों में हो जाए, वो ये कि टीचर को मैंडेटरी इंडस्ट्री के अंदर 4-5 साल की सर्विस करनी है एंड देन वो वापस आ सकता है, ये वो strongly टीच मैं नहीं कर लेकर सकता। आपके रिकमेंडेशन। मगर आप मुझे बताएं पैरेलल सिस्टम क्या होगा? वो तो चला रहे हैं ना टेक सिस्टम, इसके पैरेलल आप बूट कैंप चला रहे हैं। हाउ कैन वी स्केल दीज बूट कैंप्स टू ऑल द अभी लिटरली आई थिंक 30,000 बच्चा निकलता है, 5,000 एम्प्लॉयबल होगा। बाकी सारा जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो 6 महीने का बूट कैंप बनाएगा, 10 पल्स 6 महीने का बूट कैंप बनाएगा। मैं सिर्फ IT ग्रेजुएट्स की बात करूं अगर तो ये 6-6 महीने के बूट कैंप बना रहे हैं। ठीक है, आपका बूट कैंप सक्सेसफुल है, 90% एम्प्लॉयबल। बच्चे को माँ बाप कॉलेज भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट भी सुन ली कितनी कर रहे हैं। क्या वो एक छोटी मोटी और इन्वेस्टमेंट करके उस बच्चे को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं? I mean, this is where what we do is entirely bit different. We just don't teach things for the sake of teaching things. Okay, so we charge a 50,000 course fees. And this is a 16 weeks, 90 plus hours course. Yeah. Yeah. Yes. Focused on AI work. Okay. Not particularly. So we do certification based courses that are more around certified data analysts. So फायदा ये होता है कि मेरे पास no, not only for the finance industry. It's for everyone. So this is where the beauty comes in the class, where there is a healthcare professional coming in from Dow Labs, and वो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो ग्रेजुएट होने के बाद healthcare data analyst बन गया, right? I invested not studied. It's the thing that the other things that these at the last in home. Itu to have some other sort of things that at least don't क्या अगर हमारे गिरफ्त पत्नी होने तो हमारे इंडस्ट्री survive. It will all come down to knowing and learning those tools and teaching those tools. Tools ही है, कोई टूल खुद तो नहीं बनाया। कहने को तो पॉइंट इन टाइम तो वो 50 टूल हो जाएंगे, लेकिन जब आप ब्रॉडर टाइम देखेंगे तो आपको 100 टूल दिखेंगे और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। बट द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स इज कि मैंने फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको टैब्ल्यू सिखा दिया, मैंने आपको आज पावर बीआई सिखा दिया, बट याद रखना कि मैंने आपको अप्रोच सिखाई है, तो कल सुबह आपके पास 5वां टूल भी आता है, तो वी नीड टू स्केल अप। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, टूल नहीं सिखा रहे। बिल्कुल ऐसी relevant होंगे तो कटेंगे तो वे तो पॉप गूगल होंगे उनके लिए अगर वो आपको आते हैं मगर हम आपके मॉडल को स्केल कैसे कर सकते हैं ये सवाल। So one of the thing I wanted to answer is मेरे पास यही चैलेंज है। So मुझसे आज से कोई पूछता है ना कि पिछले 5 सालों में आपने क्या क्या किया। So back in 2018 we launched certified data analyst. उस वक्त हमारे पास एक सर्टेन बैंडविड्थ थी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जिन्होंने एग्री किया। So सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो अपनी लाइफ में मगन होते हैं, और मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने तमाम टीचर्स का जो कि प्रोफेशनल लाइफ के बाद मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद सैटरडे को टाइम डेडिकेट करते हैं। इवन इफ यू पे समवन, नो वन वांट्स टू टीच, राइट? सारे अच्छे टीचर भी नहीं होते, तो ये एक शॉर्टेज ऑफ पीपल है। Now what I am doing in last 5 years, what I have been able to is to create a layer in the industry of assistant manager data analyst, assistant manager data scientist. So अगले 1 से 2 सालों में इन सब लोगों का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हो जाएगा। Now they are fit for my criteria कि पढ़ाने वाले का जो स्टेचर है वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का होना चाहिए। Now they can come and serve back to the academy. This is why we today have only a bandwidth of training 100 students only. And people ask me कि यार क्या 100 स्टूडेंट में क्या होता है? But I love it. I love it when 100 में से 90 लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर डन, मैं प्रमोट हो गया, मेरे पास ये मैंने ये यूज केस अप्लाई कर लिया, या मेरा ये इंटरव्यू स्केड्यूल है। कुछ बच्चों के कोर्सेज से पहले ही हो जाते हैं इंटरव्यू स्केड्यूल। सो दैट्स व्हाई इसमें मेरा क्रेडिट कम है प्रोसेस और उन लोगों का जो कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे और वो टीच कर रहे हैं अपना आपको शायद सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में पता होगा या पीछे उसके जो है वो GPT-3 टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होगा। इस वक्त दुनिया का टॉप मॉडल है फैल्कन, दैट केम फ्रॉम UAE, out of nowhere. Who knows UAE is the top notch MIT or anything, but
कुछ अरसे पहले उन्होंने शेख जयद यूनिवर्सिटी रखी है एंड दिस फैल्कन इज जस्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ शेख जयद। तो क्या हमारी फास्ट यूनिवर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग नहीं कर रहे? अच्छा, इसका मतलब है नहीं कर रहे ऐसा नहीं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उर्दू जीटीटी पे काम कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बाकायदा उन्होंने काम किया है और उनके बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं जिसको गूगल ने यूज किया in their own LLMs and different things. तो आई थिंक मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ इस बारे में कि एज ए नेशन वी आर नॉट बिहाइंड, बट जैसे शेख साहब ने कहा था इट्स नाउ और नेवर, इट्स .com फॉर नाउ। और ये वो रेस है जिसमें हम कहते हैं ना आर्च राइवल्स इंडिया, तो वो बहुत आगे निकल रहा है एंड वी नीड टू वर्क इट। वन ऑफ द थिंग्स वी लॉन्च वाज, मुझे सब लोगों ने कहा था कि यार आपने ये सारे कोर्सेज लॉन्च किए तो आप कटिंग एज कोर्सेज कौन से नहीं कर रहे हैं? तो वन ऑफ द कटिंग एज थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज कंप्यूटर विजन, राइट? वी लॉन्च कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट बट नो वन वाज देयर टू ट्रेन। direct powerful internet when For my field, the market requires that patients should get access to doctors, right? That's basic. सबको मिलना चाहिए. He's asking what the doctor requires. doctor, when you said you want the doctor practice doing, I completely appreciate it. Why doesn't it? What is the doctors required to do it? Right? And that is what the missing link is, because most of the faculty in bed, and it's very funny because your doctor, the doctor, what it will know what the market requires. Yep. The market requires you to adapt. That's it. The market requires you to understand it as a person about something like a person who graduated correctly at school does not understand. The EQ side, the EQ side are that's the thing. That's the thing. Like somebody, anybody, you got to go build up an acting like this. Exactly, it's going to have the basic boot camp. It's going to have 24, well, with 90 or 80% accuracy because that's predicted in contact. But focusing on getting skills, but focusing on what the market requires, very obvious, and people say because they're not getting to that. Indians do that. Indians do that today. And that is what my only comment is. At the first question, Yeah. I thought to think about that. Can I just answer that in one sentence? I would like to ask just this. I woke up, said, after it. Bring it up. So I'd like to take this further. We're talking about skilling, the talking about foreign government, and what we're particularly saying happening here, the IT jobs for us. What the government is not saying is what problem would the government solve by doing it. पानी बेहतर हो जाएगा, बिजली बेहतर हो जाएगी. What problem was India solving when it was creating HR? So If you create good quality HR, they will solve the problem that Yes. needs to be solved, right? so आप किसी प्रॉब्लम पे फोकस करके HR नहीं बना सकते. let's just take this further. Pakistan has always been a push requirement. ये बंदा बना दो, ये इसको बाहर भिजा दो, इतने बंदे बाहर भिजा दो, इतनी टेक्सटाइल मिल सजा दो. इसीलिए तो चल नहीं रहा. इसीलिए चाहिए. अगर हमारे पास अगर हम अच्छी क्वालिटी की मैन पावर प्रोड्यूस करने में जोर दें तो प्रॉब्लम वो खुद ढूंढ लेंगे. The problem is not that we don't have problems. We do have problems. We have big problems. Game. Right now, as a country, we have no game. हमें पहले अपनी गेम बनानी है, फिर हम उस पर तनकीद करेंगे कि हमारे से ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है. ठीक है ना? तो बात सारी ये है कि पहले हमें बनानी है अपनी गेम और अपने बच्चों को उसमें घुसाना है. तो ये मैं की अप्रोच है, ये करता हूँ, ये फोकस्ड अप्रोच है बेस्ड ऑन लर्निंग द टूल्स. आई थिंक दिस इज अ लो एंडिंग फ्रूट जो हमारी पूरी जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है उसमें इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू 20-25-30 टूल्स और मेरा चांस है हमारे बच्चे टूल सीखने में माहिर है, टूल सीख जाएंगे क्योंकि टूल्स बनाए इसलिए जाते हैं, यू नो, relatively easy to understand to solve a problem. And tools की जो ट्रेनिंग है, टूल्स की जो ट्रेनिंग है वो relatively cost effective होती है. 50,000 में कमाई जा सकती. एक टूल है वो हफ्ते में 2 हफ्ते में सिखा दिया, दूसरा टूल हफ्ते 2 हफ्ते में सिखा दिया और वो इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर जिसने वो टूल इस्तेमाल किया उसके लिए वो सिखाना आसान. फिर so I think 95% of our workforce will be allocated in this area. जो दूसरी वाले जो bigger fundamental problems है ना education की, those are very difficult problems because they're very resource intensive.
They are very, very resource intensive. I mean, we have to be very sensible and practical about कि हमारे जेब में पैसे कितने, हम कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारा बड़ा शौक है हम AI करने के लिए क्यों कर रहे हैं, उसको ये भी आता हो वो भी आता हो, डॉक्टर ऐसा भी हो, डॉक्टर खुदा हो, डॉक्टर उसकी शक्ल देखे वो कर ले, फिर उसने अगर अपनी मेडिसिन सही तरह पढ़ ली हो ना तो यही बड़ी बात है, वो ही बड़ी बात है, उसी पे मैं खुश हूँ। हमारा भी कहीं पे फोकस है और हमेशा मेरा फोकस है कि फंडामेंटल्स अगर हमारे CS के बच्चों पे जो पहले 2 साल में सिखाए जाते हैं वही ठीक हो ना तो वही बड़ी बात है। बाकी तो आप भूल जाए सारी बात, बाकी आप भूल जाए। आज व्हाट इज AI? अगर आप AI कभी लर्निंग पाथ पे जाए ना डिसाइड करते हो स्कूल सोर्स की easier form. If you go on the AI learning path, it will all come down to probability and statistics, linear algebra, calculus, and matrix theory. That's it. ये सारी वो 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सारी इंजीनियरिंग और साइंस तक पढ़ाई जाती है जो हम लोग कभी नहीं और किसी को नहीं आते और किसी को भी नहीं आते। और अगर ये आते सब बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स you could do a lot of things with all the 6 subjects. Serenity, I think our time is run out. Thank you very much everyone for joining. Those who could, really appreciate it. Thank you very much to the speakers. I think this was a great discussion. We need to have more of these discussions to arrive at some kind of a solution. Please change direction. आप उसमें कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको सब एक नोट देना चाहता हूँ कि तकरीबन 6 से मेरे पास वो पहली जगह थी यहाँ पे 25 लोग थे वो कराची आएगा पहला मेरा हुआ था।